गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन मुझे तुम ओवीएस रो इंग्लिश रो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसी हमारा प्रत्येक चैप्टर रू गोटे गोटे क्वेश्चन अच्छी वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। ए सुरेश, सुरेश, आन सुरेश, द सुरेश। ये क्वेश्चन टी द क्लेवरेस्ट मीन्स आमर सुपरलेटिव होती आम टीम रो सुरेश आम टीम रो सबुठू क्लेवरेस्ट बॉय थिला, बहुत चतुर थिला। तेना कौन कर ए सुरेशटा आमर रही आमरटा सुरेश है प्रॉपर नाउन आम प्रॉपर नाउन पूर्वर ए रही आर्टिकल रही। बी है सुरेश, सुरेश इज करेक्ट आंसर। आन सुरेश, द सुरेश। तेणु आमर गोटे प्रॉपर सुरेश इज ए प्रॉपर नाउन आम प्रॉपर नाउन बिफोर आम कौन सी आर्टिकल रही तेणु सुरेश है करेक्ट आंसर। नंबर 2 द डैश वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिश, काउ, लायन, बर्ड। पड़ियारे गाईटी चरु थिला। वाज ग्रेजिंग इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आम केमी जानिबा ये वाज रहा प्लस ग्रेज प्लस आईएनजी वाज और वेयर प्लस भर प्लस आईएनजी। सो डैश द डैश वाज ग्रेजिंग, काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। थर्ड क्वेश्चन इज मीना हैज 5 डैश। नंबर ए sheep, नंबर बी काउ, नंबर सी लायन, नंबर डी डग। मीनार 5टी कौन अच्छी sheep, sheep इज सिंगुलर एंड sheep also plural। काउ तो आमर हेनी कारण काउ इज ओनली वन काउ सिंगुलर। लायन also वन लायन, डग also वन लायन। तो आमर क्वेश्चन कौन अच्छी मीना हैज 5 डैश आमर हैज 5 अच्छी तो आमर sheepटा हे आंसर। द डैश इज वेरी फेमस। ए हाउस, बी होम, सी हट, डी ताज। द ताज इज वेरी फेमस। ताज टी बहुत फेमस अच्छी आमर ताज कहीं बसला द ताज आम दटा आम यूज करा जाए केतबेले गोटे पर्टिकुलर नेम थिबो तेणु ताज इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए होटल तेणु द ताज इज वेरी फेमस। फिफ्थ वन द आर्मी हैज कंप्लीटेड डैश मार्च। माई, इट्स, आवर, his। the army is a collective noun, so army means group of soldiers। army has completed, your has completed हमरा को टेंस आसला प्रेजेंट टेंस परफेक्ट। has plus have plus verb 3 हमटे रहला completed is verb 3। the army has completed dash march। my no, my is not answer, correct answer। Its is correct answer। Its means आमर बसला आर्मी पाई बिकॉज कलेक्टिव नाउन थाए आम तापाई गोटे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर बसे ये आंसर हम इट्स। नेक्स्ट ए डैश ऑफ म्यूजिशियंस विल परफॉर्म एट आवर सिटी। नंबर ए यार टिके मिस्टेक है GANG गैंग, ग्रुप, बैंड, बंच। ये नंबर ऑफ म्यूजिशियंस को आम कौन कौचे बैंड और करेक्ट आंसर है सी। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस विल परफॉर्म एट आवर सिटी आम सिटी रे हमर म्यूजिशियन माने परफॉर्म करिवे। She picked up all the dash and made bundle। Number A sticks, number B flowers, number C coins, number D rupees। She picked up all the dash से आनिला स्टिक गुड़ी को आनिला ताको बंडल तैयारी कला से आंसर कौन हम स्टिक्स। आम तो स्टिक्स गुड़ गोटे गोटे टुगेदर करुचे गोटे बंडल हो जाऊँ तेणु आंसर है स्टिक्स।
We should drink a lot of dash. A book, B water, C money, D car. We should drink a lot of. आमे बहुत पानी पीवा उचित. So answer is water. Experience dash the best teacher. Number A is, number B are, number C how, number D where. Here experience. Here experience is a abstract noun or experience is uncountable noun. So what we write here is experience is the best teacher. The ring is made of dash. Number A cow, number B pen, number C gold, number D forest. Ring टी गोल्ड रु तैयारी होईची. आंसर कौन हम गोल्ड. इथे हमर होची मटेरियल नाउन. गोल्ड इज मटेरियल नाउन. हमर गोल्ड मटेरियल रु रिंग टी तैयारी होईची. आंसर कौन हम गोल्ड. इथे हमर होची मटेरियल नाउन. गोल्ड इज मटेरियल नाउन. हमर गोल्ड मटेरियल रु रिंग टी तैयारी होईची. नेक्स्ट इज देयर वेयर 4 dash in the room. Houses, cities, buildings, boys. There were 4 boys in the room. से रूम रे 4टी बालक माने थिले. वेयर हेबर बसला पास्ट टेंस पई. इति वेयर बसला कह पई बॉयज पई. बिकॉज ऑफ बॉयज हमर प्लूरल, सो वेयर आल्सो प्लूरल. Some dash are playing on the ground. A children, B boy, C girl, D child. Some dash are. इथे हमर आर बसला verb are playing. त हमर सेंटेंस टा को टेंस रे अछि. सेंटेंस टा हमर अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस. हम केमि जानिबा त अछि इज am are प्लस verb प्लस ing. हम उठैला are playing. त हमर some boys are playing. हम उठले are लागला हमर प्लूरल verb पई. हमर जदि सब्जेक्टटा प्लूराल रहिबो तापे वर्ब आल्सो प्लूराल रहिबो. तेंटे हमर कोन रहिबो आंसर चिल्ड्रेन. सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. हम तो बॉय हबोनी. बॉय गोटे सिंगुलर रहिला. गर्ल आल्सो सिंगुलर, चाइल्ड आल्सो सिंगुलर. हमर आंसर कोन हबो चिल्ड्रेन. टुडे वी विल सेल दिस डैश. ए कार्स, बी कार, सी काउस, डी डियर्स. आमे आज ए कार टी को बिक्री करिवु, सेल करिवु. तमे आंसर कोन हबो कार. हम एटे कार काहे बसैले. टुडे विल सेल दिस. इटा दिस टा हमर यूज करा जाय कोन पई सिंगुलर पई. इटा हमर फास्ट अछि कैट्स. हम तो कैट्स का आंसर होई परिबनी. देन बी हैला हमर कार. कार गोटे सिंगुलर अछि. हम एटे दिस जेहेतु हमर सिंगुलर पई यूज करा है हम एटी कार करिबा. तेणु सीटा अच्छी काउस. काउसटा आमर हो पारे जेहतु आम प्लूराल अच्छी डियर्स. डियर्स अल्सो हो पारे. तेणु आम कौटा है आंसर दिस कार. नंबर बी इज आंसर. टू कट वेजिटेबल्स he had to use 2 dash. First one is knife, K-N-I-F-E knife. B is K-N-I-V-E-S, sorry F-E-S. Number C K-N-I-V-E-S. Number D K-N-I-V-E. तेणु आमटा कोटा करेक्ट आंसर रहिबो यूज 2 dash. 2 मीन्स आमर प्लूराल रहिला. तेणु आमर नाइफ्स K-N-I-F-E इन द सिंगुलर. दैट इज रॉन्ग आंसर. K-N-I-F-V-E-F-E-S also wrong answer. Wrong answer. K-N-I-V-E-S C is correct answer. आम जाने आम जो सिंगुलर प्लूराल पढ़ाई जो आमर कौन सी नाउन यदि एंड हो एफ इ एफ और एफ रु आम प्लूराल कन्वर्ट करुचे आम से एफ इ प्लेस रे बसैबा VES. तेणु सी है करेक्ट आंसर. Some dash are drinking water from the pond. Some एमती क्वेश्चन आम गोटे ये बर्तमान करथिले नंबर 12. Some dash are drinking water from the pond. किछि
here number A fish, number B deers, number C deer, number D men. आम को आंसर टा रहा सम डैश आर ये आर अच्छी भर्ब मीन्स आम ये सब्जेक्टा भी भर्ब प्लूराल करवा आम आंसर कौन हम डियर सम डियर आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द pond. C is correct answer. These dash were very popular. A city, B cities, C country, D village. These dash were here these also it हमर जेहेतु बसिची हमरे प्लुराल रहइबो तापर हम एठी देखिबा verb verb कोन होइला were also हमर बसची past रो प्लुराल पई तेणु सिटी हमर होई परिबनी सेकंड नंबर cities these cities were very popular सेही सिटी गुडी को बहुत पॉपुलर थिला. The dash called his ministers. A soldier, B poet, C shopkeeper, D king. तेणु आंसर टा हमर कोन हबो D इज आंसर किंग राजा तांकर मिनिस्टर मानकु डाकिले तेणु मिनिस्टर को के डाकिले राजा डाकिले नंबर D इज आंसर. Salman Khan is a famous dash. A actress, B actor, C actors, D directors. Salman Khan only one person हमर जने गोटे हीरो तेणु सलमान खान फेमस थिले कोन पई एक्टर पई इट एक्ट्रेस इज रॉन्ग आंसर सो आंसर इज बी एक्टर सलमान खान गोटे फेमस एक्टर थिले इटू सी है एक्टर्स आम तो एक्टर्स हो पारे जेहेतु आम सलमान खान जड़े रही तेनाली डायरेक्टर सब से नुह तेणु आमर एक्टर इज आंसर. द मूवी इज इंटरेस्टिंग बट आई डू नॉट लाइक डैश हीरो इट्स हिज हर आवर ये आमर आंसर रिट्स कहीं रहा आमर इट्स लगिला मूवी मूवीटा आमर सिंगुलर द मूवी इज इंटरेस्टिंग मूवीटी बहुत इंटरेस्टिंग लगुच बट इट्स कहीं रहा आमर इट्स लगिला मूवीटा आमर सिंगुलर द मूवी इज इंटरेस्टिंग मूवीटी बहुत इंटरेस्टिंग लगुच बट किंतु आई डोंट लाइक ताहार हीरो कार हीरो से मूवी हीरो मूवी आम कौन बसवा आम कौन हिज बसवा ना हर भी बसवानी आवर भी लगनी ये आंसर रे इट्स लगिला मूवी से मूवीटी बहुत इंटरेस्टिंग लगुच किंतु ता हीरो मते लाइक नुहे. माय अंकल कुड नॉट मीट डैश वाइफ ए हर बी इट्स सी हिज डी देयर. माय अंकल कुड नॉट मीट डैश वाइफ मो मामू तांकर मिसेस को देखी पारे ना मीट करि पारे ना तेणु कहार वाइफ को माय अंकल पई कौन बसिबो हिज बसिबो सो सी इज करेक्ट आंसर. ए क्रू ऑफ डैश ए शोल्डर्स बी कीस सी सेलर्स डी फ्लावर्स. ए क्रू इज कलेक्टिव नाउन आम क्रूटा क्या करुचे ग्रुप ऑफ सेलर्स नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ग्रुप ऑफ शोल्डर्स कॉल्ड आर्मी ग्रुप ऑफ कीस कॉल्ड बॉन्स बट आंसर इज सेलर्स. A herd of dash A stars B cattle C people D sticks. A herd of cattle is a group of animals group of animals is called herd also collective noun. A dash of sheep number A gang number B army number C bench number D flock. A dash of sheep flock of sheep and आम फ्लॉक आमर ग्रुप ऑफ शिप के आम फ्लॉक कहचे ग्रुप ऑफ बर्ड्स कोर्स आम फ्लॉक कहचे फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन. ए डैश ऑफ स्टिक्स क्रू बंडल बंच टीम ये आमर कौट आंसर हम क्रू तो आमर आंसर हेनी क्रू इज ग्रुप ऑफ सेलर्स देन बंच ऑल्सो नंबर सी बंच इज ग्रुप ऑफ ग्रेप्स ग्रुप ऑफ कीज
and then number D, team. Team is group of players. So number B is correct answer. Bundle, bundle of sticks. Bundle also collective noun. A bench of dash. A people, B directors, C judges, D stars. A bench of judges. A bench also collective noun. THIEVES is thieves is for thief. Mice is for dash. A is mouse. B is correct answer. Bundle, bundle of sticks. Bundle also collective noun. A bench of dash. A people, B directors, C judges, D stars. A bench of judges. A bench also collective noun. THIEVES is thieves is for thief. Mice is for dash. A is mouse. B is mouse. C is mice. D is mices. Thieves is for thief. Thieves is plural of thief. Mice is for plural of what? Mouse. Number B is answer. MOUSE, mouse. Mice is plural of mouse. Queen is for dash. King is for king. Dash is for gentleman. A is woman. B is girl. C is princess. D is lady. So here queen is for king. Dash is for gentleman. Lady is answer. Lady is for gentleman. Gentleman is a masculine gender. Lady is feminine gender. आमर यहाँ जेंडर रु आसला. बक्सेस इज फॉर बॉक्स. डैश इज फॉर ऑक्स. यहाँ आमर कौन आसला? सिंगुलर प्लूराल. बक्सेस इज फॉर बॉक्स. बक्सेस इज प्लूराल ऑफ बॉक्स. डैश इज फॉर ऑक्स. तेणु आमर ऑक्स रा कौन रहिबा प्लूराल? ऑक्सन. ये इज करेक्ट आंसर. ऑक्सन. आर्मी इज फॉर सोल्जर्स. Gang is for dash. People, leaders, robbers, merchants. Gang is for robbers. Gang also collective noun. Here army also collective noun. Mistress is for master. Noun is for dash. Number A man. Number B poet. Number C lad. Number D monk. What is the answer? आम ये आंसर रहिबो monk. नॉन रहा जेंडर चेंज करुचे monk रोचे. मिस्ट्रेस इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ मास्टर. नॉन इज जेंडर ऑफ monk. सो monk इज आंसर. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मु आमर जो मैंने ओबीएस प्रिपेयर होती भिडियोटा को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु और आपणकर फ्रेंड्स मानक शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू.